So, okay, we'll start first. Listen, we'll start first the German unification. Last class रे German unification हमें पढ़ी थे ले आउथरे मु केवल मने पके दउची German unification केमते हला हमें पढ़िबा कि German unification, unifications of Italy, unifications of Great Britain, visualizing nation, nationalism and imperialism. चारिटा जिनस आज हमें कवर करबा गोटे हबो जर्मन यूनिफिकेशन नंबर 2 रे हबो यूनिफिकेशंस ऑफ इटाली और इटाली यूनिफिकेशन यूनिफिकेशंस ऑफ इटाली थर्ड रे यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन यूके लिख दउची यूके यूनाइटेड किंगडम बा ग्रेट ब्रिटेन जहा को नंबर 4 रे आमे पढ़िबा इंपेरियलिज्म और नेशनलिज्म sorry visualizing nation and number 5 imperialism and nationalism. Note down these things. এই চ্যাপ্টর रो এই পার্ট গুড়া को टिके पिलांको भितरे कंफ्यूजन रहे बुझी पारंतिनी जर्मन यूनिफिकेशन केमती हला इटाली यूनिफिकेशन केमती हला जदि ए प्रोसेस गुडी को बहुत इजी प्रोसेस आउ से इवेंट्स गुडा को मन रखिले हमर यूनिफिकेशन जर्मन यूनिफिकेशन इटाली यूनिफिकेशन विजुअलाइजिंग नेशन एंड इंपेरियलिज्म नेशनलिज्म क्लियर हे जिवो पछरे क्लियरली मते सुनिबो जो मानु को कहूची बुक समस्तंकर पाखरे बुक रहबो समस्तंकर बुक समस्तंकर रखिबो पॉइंट्स गुडा को अंडरलाइन करिवो मु जते बळे जो जो पॉइंट्स गुडा को सब पॉइंट्स को नोट करबा अपेक्षा अंडरलाइन करिवो आ ताको पढिबो ओके लेट्स कम फर्स्ट द जर्मन यूनिफिकेशन जदि आम जर्मन यूनिफिकेशन कथा कहवा जर्मन यूनिफिकेशन पूर्व आम टे यूरोप रो बैकग्राउंड देखा यूरोप रे जो नेशनलिज्म बैकग्राउंड को देखा यूरोप रे कौन नेशनलिज्म बैकग्राउंड था सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी हाउ जर्मन गेट यूनिफाइड जर्मन केमिति यूनिफाइड हैला आफ्टर 1848 revolution in France, the whole Europe has whole Europe the tendency of nationalism spread. सारा यूरोप रे nationalism रो tendency After 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. 1848 परे सारा यूरोप रे नेशनलिस्ट मूवमेंट चलीथिला समस्तଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ कंट्री चाहुतला इंडिपेंडेंस होबा पाए सब कंट्री चाहितला जे आबे यूनिफाइड होबो बोली आ सेमती जर्मन भी चाहुतला So you know, German was a 39 confederation before. German be 39 confederation में थिला. German wanted to be unified, but now the burden of German unification fell on Prussia. बर्तमान जर्मन यूनिफिकेशन रो दायित्व कहाँ पर आसिला प्रुसिया ऊपर आसिला कहीं के प्रुसिया ऊपर आसिला आ कहाँ पर आसिला नि ऑटोवन बिस्मार्क थिले जर्मन यूनिफिकेशन रो आर्किटेक्ट ऑटोवन बिस्मार्क जर्मन यूनिफिकेशन रो आर्किटेक्ट जस्ट ए पॉइंट गुडा को टिके नोट करत हम बुक रे दिस लिबरल इनिशिएटिव टू द नेशन बिल्डिंग was however repressed by the combined forces of the monarchy and military supported by the large landowners of Prussia. Prussia took on the leadership of the movement for national unification and its chief minister Otto von Bismarck was the architect of German unification. सुनो जतबले जर्मन यूनिफिकेशन पई चाहिले
जर्मन यूनिफिकेशन समय रे प्रुसिया रो जो माने लैंड ओनर्स थिले प्रुसिया रो लैंड ओनर्स को जंकर को जाउतला मन रखो प्रुसिया रो जो माने लैंड ओनर्स थिले समान को जंकर्स को जाउतला कहना राजा चाहू नथिले मोनार्की माने चाहू नथिले प्रुसिया रो यूनिफिकेशन सॉरी जर्मन रो यूनिफिकेशन पाए the monarchy did not support the German unification. They wanted to suppress the German nationalist movement. राजा जर्मन रो यूनिफिकेशन प्रोसेस जतबे चलीतला जर्मन जतबे चाहूतला यूनिफाइड हवा पाई जर्मन रो जो माने किंग्स थिले समाने कोन कले ए यूनिफिकेशन प्रोसेस को सप्रेस करबा को चाहूतले विशेष करी जर्मन रो जो माने लैंड ओनर्स थिले तांको जंकर्स को जाउतला ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଜର୍ମାନ ୟୁନିଫିକେସନ को सप्रेस करबा पाए बट नाउ प्रुसिया टुक द लीडरशिप ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन प्रुसिया टुक द लीडरशिप ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन ए जर्मन यूनिफिकेशन रो दायित्व नेले किए ना प्रुसिया प्रुसिया रो जे चीफ मिनिस्टर थिले प्रुसिया रो जे चीफ मिनिस्टर थिले ओटो वान बिस्मार्क ओटो वान बिस्मार्क जहां को जर्मन यूनिफिकेशन रो आर्किटेक्ट बोली कहंती तो जर्मन यूनिफिकेशन रो आर्किटेक्ट ओटो वान बिस्मार्क बा प्रुसिया लीडरशिप नेला जर्मन को यूनिफाइड करबा पाई सो ही फॉट 3 वार्स वर्तमान प्रुसिया तीनटा वार फाइट कला का सहित प्रुसिया फॉट 3 वार्स विथ हुम डेनमार्क फ्रांस और ऑस्ट्रिया प्रुसिया फॉट 3 वार्स मन ए पॉइंट एवडा होची जर्मन यूनिफिकेशन नो प्रोसेस प्रुसिया फॉट 3 वार्स with Denmark, France and Austria. These wars continued for 7 years. And after these 3 wars, Prussia got victory. In 1874, Prussia got victory or Prussia defeated these 3 powers. वर्तमान तीनटा वार हैला आ तीनटा वार 7 वर्ष कंटिन्यू होला सिबुना कोड में पढौछ मते कहबो 3 वर्ष वार हैला आ 3 वर्ष वार ता 3 वर्ष सॉरी तीनटा वार हैला 3 वार्स कंटिन्यूड फॉर 7 इयर्स 7 वर्ष पर्यंत ए वार कंटिन्यू होला एंड आफ्टर दिस देन प्रुसिया गॉट विक्ट्री इन 1874 रे प्रुसिया रो विक्ट्री हला और प्रुसिया विक्ट्री परे देन द यूनिफिकेशन जर्मन कंप्लीटेड नाउ द प्रुसिया रो किंग विलियम विक्टर विलियम वन became the emperor of Germany. After these 3 wars, Prussia got victory. 3 वर्ष युद्ध पर प्रुसिया रो विक्ट्री हला और प्रुसिया रो विक्ट्री हला पर जर्मन यूनिफाइड हला और जर्मन यूनिफाइड हला पर प्रुसिया रो जे राजा थिले विलियम वन प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन ए कॉमन ceremony held at Versailles 18 January 1871 रे एथरे भूल अछि 1871 74 अछि 1871 हो तम बारे कहते थे 1871 रे प्रुसिया विक्ट्री हला सॉरी 1874 लिखे 1871 रे प्रुसिया ए डेनमार्क फ्रांस और ऑस्ट्रिया को युद्ध रे हराई देला तापर प्रुसिया रो विक्ट्री हला पर प्रुसिया बिकेम द सॉरी जर्मन बिकेम यूनिफाइड हे गला और जर्मन यूनिफाइड हे सरला पर विलियम वन को 18 जनवरी
18 जनवरी 1871 रे एम्परर डिक्लेयर कर दिया गला। जर्मन रो एम्परर डिक्लेयर कर दिया गला। अब जर्मन एम्परर कोठे हेले ना एटा हला हॉल ऑफ मिरर वर्सिलिस। वर्सिलिस रो हॉल ऑफ मिरर रे जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गला। बुझला जर्मन यूनिफिकेशन ना प्रोसेस कंप्लीट। So Kaiser William I became the Emperor of Prussia, Emperor of Germany after German unification. German unification ପରେ German ର जे Emperor ହେଲେ ସେ ହେଲେ Kaiser William I. Understood? So the new state placed a strong emphasis. वर्तमान जर्मन यूनिफिकेशन सरीगला। जर्मन यूनिफिकेशन ପରେ कौन कौन चेंजेस हैला जर्मन रे। जर्मन जे नुआ राजा हेले जे नुआ एम्परर हेले सो द स्टेट गेव मोर एम्फासिस ऑन मॉडर्नाइजिंग करेंसी नंबर 2 banking and legal judicial system modernizing currency banking number 3 legal and judicial system जर्मन यूनिफिकेशन पर जर्मन रे जो प्रुसिया रो राजा हेले प्रुसिया रो बहुत इंपोर्टेंस बढ़िला काइना प्रुसिया जर्मन यूनिफिकेशन रो लीडरशिप करूथला तो प्रुसिया ऊपर बहुत इंपोर्टेंस बढ़ला प्रुसिया रो पॉलिटिकल डोमिनेंस बढ़िला आ पॉलिटिकल डोमिनेंस बढ़ी सारला परे जर्मन स्टेट रे जर्मन कंट्री रे so Prussia took these measures. The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial system in Germany. Prussian measures and practices often became a model for Germany. बर्तमान प्रुसिया समस्त गोटे एग्जांपल हो गला प्रुसिया समस्त गोटे मॉडल हो गला समस्त प्रुसिया को फॉलो कले अंडरस्टैंड गोटे गोटे प्रोसेस कंप्लीट हम नेक्स्ट प्रोसेस रे हमें पुणी जीवा इटाली यूनिफिकेशन सो लेट अस सी द इटाली यूनिफिकेशन बर्तमान इटाली यूनिफिकेशन केमते हला सेटा देखला जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गला प्रोसेस मन रहिला प्रोसेस को तमे खाता रे नोट करि पारो बा अंडरलाइन करि पारो बुक रे सो दैट यू कैन रीड इट लेटर एंड यू कैन अंडरस्टैंड रुद्र जर्मन यूनिफिकेशन मन रहिला पचाले कहि दबु हां ओके सत्य पाटर चॉकलेट का so next you see the Italy unification this is complete nationalism यूरोप रे ए जिंस गुडी को पिला जेहेतु लाइन बाय लाइन पढंतिनी बही देखंतिनी ए पॉइंट गुडा को मने पड़े ना जेतेबेले क्वेश्चन आसे इटाली यूनिफिकेशन प्रोसेस लाइक राइट द प्रोसेस ऑफ इटाली यूनिफिकेशन और हाउ इटाली गॉट यूनिफाइड बट बहुत समय क्वेश्चन आसे जर्मन यूनिफिकेशन प्रोसेस लाइक सो ए जेहेतु आमे थोरोली बही न देखु मने पड़े ना लेट अस कम टू इटाली यूनिफिकेशन जेतेबेले जर्मन को देखा गला जर्मन यूनिफिकेशन सरीला Italy also wanted to be unified. Italy wanted to be unified. Like Germany, Italy too had a long history of political fragmentations. Italians were scattered over several dynasties as well as the multinational Habsburg Empire. Italy भी जर्मन जमते 39 कॉन्फेडरेशन थिला इटाली भी सेमती बहुत डायनास्टिक थिला बहुत छोटिया छोटिया किंगडम डचीज थिला सेठी विभिन्न प्रकार राजा शासन करुले आउ इटली रे जो शासन करुले मल्टीनेशनल हाब्सबर्ग एम्पायर जगन्नाथ ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी इटाली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स प्रथमे आमे इटाली यूनिफिकेशन पूर्वरु यू शुड नो हाउ इटाली वाज बिफोर इटाली यूनिफिकेशन रे
प्रथम देखिए इटाली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। इटाली 7 स्टेट्स रे डिवाइडेड हेकिथिला। Italy was divided into 7 states, of which only one Sardinia Piedmont was ruled by Italian princely house. मन रखते हुए सार्डिनिया पिडमंट। ये सार्डिनिया पिडमंट केवल इटालियन प्रिंसले हाउस द्वारा रूल होता। आउ सब जगह अलग अलग राजा थे। मल्टीनेशनल हाब्सबर्ग एम्पायर थिला। कौन सी गोटे जगह गोटे एम्पायर बा गोटे किंग नथिले, अलग अलग जगह अलग अलग राजा थिले, किंतु इटाली 7 स्टेट्स रे डिवाइड हेतला। आ 7 स्टेट्स भितरे सार्डिनिया पिडमंट ओनली रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस। केवल सार्डिनिया पिडमंट को ही इटाली शासन करथला, आउ सब जगह नथिला। आउ को जगह किए शासन करथला तो नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हाब्सबर्ग। नॉर्थ रा ऑस्ट्रियन हाब्सबर्ग अंडरलाइन कर दियो बहिरे। सेंटर वाज रूल्ड बाय पोप। सदर्न रीजन्स वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। इवन द इटालियन लैंग्वेज had not acquired one common form and still had many regional and local varieties। खाली जे अलग अलग राजा शासन करथिले से कथा नुहे, इटाली रे गोटे कॉमन लैंग्वेज भी नथिला। इटालियन लैंग्वेज को गोटे कॉमन स्टैंडर्ड बा कॉमन लैंग्वेज भावे एक्सेप्ट करा जाई नथिला। सब जगह रे तंगर निज निज लैंग्वेज यूज करा जाउतला। ये थिला इटली रो कथा। तुम सुनिथिबो जे गुसेपे मेजिनी कथा हम सुनिथिले, हु वाज ए रिवोल्यूशनरी ऑफ इटली। इटली रो जने रिवोल्यूशनरी थिले गुसेपे मेजिनी। गुसेपे मेजिनी कोड जन्म होइथिले राजा। वेयर गुसेपे मेजिनी वाज बोर्न। संकल्प stand up and say me where Giuseppe Mazzini was born। stand up। जान एटा बोधे मो मन होची मो बोधे 5 थर रु 7 थर खंड कहिछि Giuseppe Mazzini मंत्र भलिया मु ताकू मुखस्त कर, किंतु तमर मन नाही एते सीरियसली तमे पढुतो। सत्य वेयर वाज Giuseppe Mazzini born। stand up and say me। which place। इटाली गोटे प्लेस, मु कहदेवी इंडिया। इंडिया गोटे प्लेस शिवना। वेयर वाज Giuseppe Mazzini born in Italy। जगह Genoa। 1807। in 1807 Giuseppe Mazzini was born in Genoa, Italy, but in 1831 Giuseppe Mazzini was exiled because of his revolutionary activities in Liguria। Giuseppe Mazzini गोटे रिवोल्यूशनरी थिला। तुमे कंपेयर करि पारो जेमिति खुदीराम बोस, भगत सिंह बलिया भारतर रिवोल्यूशनरी मानक जेमिति थिले, तो Giuseppe Mazzini भी सेमति थिला। से गोटे लिबरल नेशनलिस्ट थिला। लिबरल नेशनलिस्ट बुझी परजो। लिबरल नेशनलिस्ट कहले जो माने राजांक विरुद्ध रे, राजांकर शासन विरुद्ध रे रूल करुथिले, राजांकर शासन को जो माने अपोज करुथिले से मानको नेशनलिस्ट लिबरल नेशनलिस्ट को जाउतला। एंड Giuseppe Mazzini was that kind of person। He was born in Genoa 1807 and was exiled in 1831 due to his revolutionary activity in Liguria। लिगुरिया रे जतबेले से रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कला, ताको आइसोलेटेड कर दिया गला, जेल को पठाई दिया गला। तापरे दीटा से सीक्रेट सोसाइटी तैयारी गला। यू नो द सीक्रेट सोसाइटी रुद्र, व्हाट वर दिस टू सीक्रेट सोसाइटी? छेड़ा सीक्रेट व्हाट टू सीक्रेट सोसाइटी? यंग इटाली वेयर
श्रुति यंग इटाली आउ कौन यंग यूरोप इन बर्न यंग इटाली इन मर्सिलिस ए दीटा जगह रे से दीटा सीक्रेट सोसाइटी तैयारी कला ए दीटा सीक्रेट सोसाइटी रो ऑब्जेक्टिव थला राजा को कौन करिवे अपोज करिवे एवं से सीक्रेट सोसाइटी रो जो माने मेंबर थिले से माने लाइक माइंडेड कहले रिवोल्यूशनरी थिले से माने जॉइन करथिले कोठी सीक्रेट सोसाइटी रे during 1830 Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for unitary Italian republic 1830 बेलू Giuseppe Mazzini कौन कला गोटे प्रोग्राम तैयारी कला से प्रोग्राम रो नाम थला यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक Unitary Italian Republic. He had also formed a secret society जोटा मुझे तुमको कहली जे दीटा secret society थिला Young Europe in Bonn, Young Italy in Marseilles. But in 1831, the failure of revolutionary uprising both in 1831 1848 meant that the mantle now fell on the Sardinia Piedmont under the ruler King Victor Emmanuel II. Giuseppe Mazzini रो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी जते सक्सेस हैला नाही Giuseppe Mazzini रो रिवोल्यूशन एते सक्सेस हैला नहीं 1831 रे ठीक बंद कर सेथे दे गोटे के नहीं आ सकते ओके 1831 रे जो 1831 और 1848 भितरे जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज Giuseppe Mazzini कला इट वाज फेल्ड Giuseppe Mazzini रो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज फेल हे गला सप्रेस कर देले पारलानी तापर वर्तमान दायित्व आसला कहा परे ना सार्डिनिया पिडमंट रो जे रूलर थिले तंग नाम थिला किंग विक्टर इमानुएल II King Victor Emmanuel II now the mental fell on Sardinia Piedmont. Mental fell माने वर्तमान दायित्व पड़ला कहा परे ना Sardinia Piedmont रो रूलर थिले Victor Emmanuel II तांको पर दायित्व आसिला he should unify Italy. तांको दायित्व दिया गला इटाली रो यूनिफाइड करबा पई जो माने एजुकेटेड मास थिले इटाली रो जो माने थिले एलाइट्स कहले एजुकेटेड मास इटाली रो जो माने थिले से माने काहे कि भाबुथिले इटाली को यूनिफाइड करबा पई ना ऑब्जेक्टिव थिला ये यूनिफाइड इटाली ऑफर्ड देम ए पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस जदे इटाली टा यूनिफाइड हुए तले लाभ कोन हबो इटाली टा यूनिफाइड हेले पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बढ़िबो पॉलिटिकल डोमिनेंस बढ़िबो आउ सेकंड रे कोन हबो ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हबो इटाली जदी यूनिफाइड हे जाए पॉलिटिकल स्ट्रेंथ इटाली रो बढ़िबो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हबो एई आशा रे एजुकेटेड इलाइट माने इटाली यूनिफिकेशन को सपोर्ट कले इटली रो जे चीफ मिनिस्टर थिले हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ इटली The chief minister of Italy, who was Count Cavour, Monaco. Count Cavour, who was the chief minister at that time of Italy, he wanted led the movement. जमते Bismarck German रो, जमते Bismarck थिले German रो unified रे उन्हें बड़ा रोल प्ले करथिले तांको आर्किटेक्ट कुआ जाउतला सेमति हमें काउंट काभर को इटाली यूनिफिकेशन नो लीडर्स बोली कहि परिबा काउंट काभर वाज द चीफ मिनिस्टर हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटाली वाज नीदर ए रिवोल्यूशनरी नॉर ए डेमोक्रेट किंतु ए काउंट काभर ना रिवोल्यूशनरी थिला ना डेमोक्रेट थिला से ए ग्रुप रो नथिला रिवोल्यूशनरी ग्रुप रो से नथिला से रिवोल्यूशन कर नथिला से गोटे साधारण घर रो लोक थिला काउंट क्याबर धनी लोक थिला धनी घर रो लोक थिला एजुकेटेड भी थिला
ताको बहुत लैंग्वेज आसुतला फ्रेंच इटालियन मान अपेक्षा से बहुत भल भाव फ्रेंच लैंग्वेज रे कथा ही पारुतला through a tactful diplomatic alliance with France engineered by Cavour, Sardinia Piedmont succeeded in defeating Austrian forces in 1859. A Count Cavour बहुत डिप्लोमेटिक थिला एजुकेटेड थिला किंतु से रिवोल्यूशनरी नथिला से कोन से रिवोल्यूशन करेनी से गोटे धनी घर पिला धनी घर लोक थिला किंतु ताको फ्रेंच से भलो भाबे फ्रेंच लैंग्वेज रे कथा ही पारुतिला आ फ्रेंच सहित से गोटे डिप्लोमेटिक अलायंस करिकरी 1859 रे ऑस्ट्रिया को डिफीट करतला ऑस्ट्रिया डिफीटेड by the leadership under the leadership of Count Cavour. So after Austrian defeat in 1859, Giuseppe Garibaldi, आउ जने soldier general थे Giuseppe Garibaldi, who joined the movement in 1860. They marched into South Italy, Kingdom of Two Sicilies, succeeded in winning the support of local peasants in order to drive out the Spanish ruler. Spain रो जो रूलर थिले तांको ड्राइव आउट करबा पई इटाली रो peasants मानक सहित मिसिकरी गुसेपी गारिबाल्डी आउ काउंट कैवोर एमाने कोन कले 1860 बेलको इटाली रो बहुत जगह रो स्पेन रो लोक मान को हटाई देले तापर 1861 Victor Emmanuel II proclaimed King of United Italy. 1861 बेलको 1860 रे कोन हला Spanish ruler removed. Spanish ruler was overthrown. Spanish ruler को overthrown कर देले हटाई देले ताको जगह रो आ 1861 रे Italy became unified and Victor Emmanuel II became the king of United Italy. 1861 बेलको इटाली यूनिफाइड हो गला आ यूनिफाइड इटाली रो राजा हो गले के विक्टर इमानुएल II. So this is the process of Italy unifications. जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट इटाली यूनिफिकेशन कंप्लीट इटाली भी यूनिफाइड हो गला जर्मन भी यूनिफाइड हो गला तापर आसला ग्रेट ब्रिटेन रो कथा यूके रो कथा कहना समस्त जानितले जे यूके होची बा ग्रेट ब्रिटेन होची मॉडल फॉर नेशन स्टेट लेवे दो जेना तो देखो जर्मन और इटाली रे जो यूनिफिकेशन चला ए यूनिफिकेशन केवल युद्ध होई रही राजा माने अन्य राजा मान सहित युद्ध करचंती तांको देशरु अलगा रूलर को हटाई देकरी एठी तांको कंट्री को यूनिफाइड करचंती बा इंडिपेंडेंट करचंती किंतु ग्रेट ब्रिटेन कथा अलगा ग्रेट ब्रिटेन बा ब्रिटेन कथा अलगा ग्रेट ब्रिटेन नो यूनिफिकेशन विदाउट एनी रिवोल्यूशन हेच बोली कहा जाए बा रिवोल्यूशन परे भी तांकर गोटे स्ट्रेंज केस थिला The model of nation or the nation state some scholars have argued in Great Britain समस्त कोनते जे ग्रेट ब्रिटेन होची नेशन स्टेट रो मॉडल सारा यूरोप रो एग्जांपल होची ग्रेट ब्रिटेन नेशन स्टेट रो मॉडल बोली कहा जाए इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट was not the result of sudden upheaval or revolution it was the result of long drawn out process. There was no British nation prior to 18th century. 18th century पूर्वरु British nation करिकरी किछि नथिला जगह. The primary identities of the people who inhabited in British Isles were ethnic ones. British गोटे आइलैंड थिला. British गोटे आइलैंड थिला. आ British आइलैंड रो जो माने इनहैबिटेंट्स बा सिटीजन्स थिले समान समस्त इंग्लिश नथिले. समस्त ब्रिटिश रो लोक नथिले. समान को भीतर के थिले ना इंग्लिश लोक थिले ब्रिटिश लोक थिले किछि लोक वेल्स रो लोक थिले वेल्स गोटे छोटिया आइलैंड ब्रिटिश रो स्कॉटलैंड रो लोक थिले आयरिश रो लोक थिले तो ए समस्त को नै करी ब्रिटिश परवर्ती समय यूनिफाइड हैला किंतु
18th century बेलू there was no certain king of British or Britain. All of these ethnic groups had their own cultural political tradition, but the English nation steadily grew in wealth. तुम जानिଛ इंग्रेज लोक माने बहुत चालाक थिले। इंग्रेज लोक माने एशिया रो विभिन्न जगह हो, अमेरिका हो, साउथ अफ्रीका हो, सब जगह रे तांकर कॉलोनियल एस्टैब्लिशमेंट करथिले। रुद्र मो कथा सुनुछु। तो ब्रिटिश लोक माने विभिन्न जगह कॉलोनियल एस्टाब्लिशमेंट करथिले। आ कॉलोनियल एस्टाब्लिशमेंट माध्यम से माने बहुत पैसा रोजगार करथिले। आस्ते आस्ते इंग्लिश लोक बहुत रिच हो गले, धनी हो गले। तेणु धनी हो गला परे धनी लोकर सबले कौन हम चारिआडे तार रेस्पेक्ट हम, प्रेस्टिज बढ़िबो, दबदबा रहिबो। तो इंग्लिश लोक मानकर सेया हला। इंग्लिश लोक मानकर राज चलला सबुआडे। लैंग्वेज को बहुत इंपोर्टेंस दिया गला। द इंग्लिश पार्लियामेंट व्हिच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688 at the end of a protracted conflict was the instrument through which a nation state with England at its center came to be forged. तुम जानिछ जे प्रथम 1688 रे गोटे ग्लोरियस रिवोल्यूशन होइतला। जो ग्लोरियस रिवोल्यूशन रे ब्रिटिश पार्लियामेंट पावर राजांक पाखु छड़ी आनथिले। राजांक मोनार्किकल रूल सरी जाइतला 1688 रे आ पार्लियामेंट पाखरे क्षमता थिला। तेणु ब्रिटिश को सारा यूरोप रो नेशन स्टेट रो मॉडल बोली कहा जाए। However, in 1707 this is one of the agreement, act of union, एटा मन act of union। ब्रिटिश कौन कला गोटे एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड भितर गोटे एग्रीमेंट हैला, ताकू कहा गला एक्ट ऑफ यूनियन इंग्लिश और स्कॉटलैंड भितर। इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड there was a treaty, you can say there was an act of union 1707. There was a treaty between England and Scotland in 1707 which is known as act of union, which resulted in the formation of united Great Britain. ए act of union द्वारा तुम जानतो ग्रीस इंडिपेंडेंस जब देइतला, ग्रीस इंडिपेंडेंस रे गोटे एग्रीमेंट देइतला। से एग्रीमेंट कोन थिला? ग्रीस इंडिपेंडेंस रे गोटे एग्रीमेंट थिला, कोन थिला? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 रे जमते ग्रीक इंडिपेंडेंट हेतला गोटे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल माध्यम रे समिति ए जो ग्रेट ब्रिटेन भी यूनाइटेड हला। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड भितर गोटे ट्रीटी हला 1707 जोटा को एक्ट ऑफ यूनियन कहा जाए। और ये एक्ट ऑफ यूनियन रे ग्रेट ब्रिटेन बिकेम यूनिफाइड। ग्रेट ब्रिटेन बर्तमान यूनिफाइड हो गला। In effect, that England was able to impose its influence on Scotland. तापर इंग्लैंड रो इंपोर्टेंस बढ़िला, इंग्लैंड रो कंट्रोल बढ़िला स्कॉटलैंड ऊपर। The British Parliament was henceforth dominated by English members. जतबले ग्रेट ब्रिटेन यूनिफाइड हो गला, ग्रेट ब्रिटेन यूनिफाइड होला परे इंग्लिश मेंबर कर इंपोर्टेंस बढ़िला पार्लियामेंट रे। The growth of British identity meant that Scotland's distinctive culture, political institutions were systematically suppressed. तो आस्ते आस्ते ब्रिटिश रो कल्चर, ब्रिटिश रो ट्रेडिशन, ब्रिटिश लोकों का इम्पोर्टेंस सारा पार्लियामेंट रे बढ़िला, ग्रेट ब्रिटेन में बढ़िला। स्कॉटलैंड आस्ते आस्ते सप्रेस हो गला, स्कॉटलैंड आस्ते आस्ते दबी गला। The Catholic clans that inhabited Scottish Highlands suffered terrible repression. जो कैथोलिक माने स्कॉटलैंड रे रहउतले से माने बहुत हैरान हेले, बहुत कष्ट भोगिले। से माने गोटे लैंग्वेज कहउतले कैथोलिक, जो माने स्कॉटलैंड रो कैथोलिक माने से माने गोटे लैंग्वेज कहउतले गायलिक लैंग्वेज। स्कॉटलैंड रो लोक जो माने गोटे लैंग्वेज कहउतले गायलिक लैंग्वेज। एवं तांकर जो नेशनल ड्रेस से माने पिंदुतले तांको बंद कर दिया गला। तमे आ गायलिक लैंग्वेज कहि परिबनी, तांको यूनिफॉर्म से माने आ पिंदी परले नाही। बहुत समय तांको स्कॉटलैंड लोगों को ब्रिटेन रो बाहर कर देले।
जमती बांग्लादेश रू लोक बांग्लादेशी को बाहर कर दउछन से सब आसी इंडिया रहउछन तो ग्रेट ब्रिटेन जतो यूनिफाइड हे गला स्कॉटलैंड रो लोक को हटे देले तांग देश सेमतिया तम छोट छोट आइलैंड को नहीं करी ग्रेट ब्रिटेन थिला छोट छोट आइलैंड को नहीं करी आयरलैंड भी गोटे छोटिया आइलैंड थिला ग्रेट ब्रिटेन रो Ireland suffered a similar fate. It was a country deeply divided between Catholic and Protestant. English helped the Protestant of Ireland to establish their dominance over a largely Catholic one. Ireland रे दीटा ग्रुप रो लोक रहउतले कैथोलिक रहउतले और प्रोटेस्टेंट रहउतले ब्रिटिश लोक माने प्रोटेस्टेंट को हेल्प कले प्रोटेस्टेंट लोक मान को हेल्प कले समाने कैथोलिक मान को हटे देले After failed revolt led by Wolfton and his United Irishmen, तेणु आयरलैंड रो जने रिवोल्यूशनरी थिला ता नाम थिला वोल्फटन ये रिवोल्यूशन कला ब्रिटिश एग्नेस्ट रे केबे रिवोल्यूशन कला 1801 रे सॉरी 1798 रे 1798 रे ए वोल्फटन एन आयरिशमैन जे गोटे आयरिश लोक आयरलैंड लोक ये रिवोल्यूशन कला ब्रिटिश एग्नेस्ट रे बट ता रिवोल्यूशन एते सक्सेस हेलानी Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom last रे ए वोल्फटन हारिगला वोल्फटन रो रिवोल्यूशन एते सक्सेसफुल हेलानी आ 1801 रे आयरलैंड भी मिसिगला इंग्लैंड सहित 1801 रे आयरलैंड मिसिगला इंग्लैंड सहित आयरलैंड भी मिसिगला Now, Great Britain or England became a unified country. तो ग्रेट ब्रिटेन वर्तमान यूनिफाइड कंट्री हे गेला वर्तमान ग्रेट ब्रिटेन जते बळे यूनिफाइड हे गेला द सिंबल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन द नेशनल फ्लैग ग्रेट ब्रिटेन नो नेशनल फ्लैग रो नाम कोन थिला कहथिला गुरु द यूनियन जैक तापरे ग्रेट ब्रिटेन नो नेशनल एंथम कोन थिला गॉड सेव आवर नोबल किंग्स तो वर्तमान ग्रेट ब्रिटेन ता निजर नेशनल सिंबल बा नेशनल फ्लैग तैयार कला जहा को हमें यूनियन जैक कहूचे तापर ताकर नेशनल एंथम सेला ग्रेट ब्रिटेन रो गॉड सेव आवर नोबल किंग्स द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड तापर परे इंग्लिश लैंग्वेज ता सारा ग्रेट ब्रिटेन नुहे यूरोप रो विभिन्न जगह रे इंग्लिश लैंग्वेज रो इंपोर्टेंस भी बढ़ी चलिला हला ये थिला ग्रेट ब्रिटेन रो यूनिफिकेशन जगह